हमारे इन रचनाकारों का जो इस समय हमारे अगले सेशन में अपने विचारों को आपसे साझा करेंगे। प्रबल कुमार बसु सर, जाने माने कवि। जब आपकी लेखनी चलती है तो बेहतरीन कविताओं की रचना होती है सर। अब तक 21 वॉल्यूम कविताओं के आपके प्रकाशित हो चुके हैं, 3 लघु कथा संग्रह आपके आ चुके हैं और 5 निबंध संग्रह हैं। आपने साइन पोस्ट बंगाली पोइट्री सिंस इंडिपेंडेंस को एडिट करने का भी काम किया है। गौरी भट्टाचार्य स्मृति सम्मान से आपकी पहली पुस्तक तुम्हें प्रथम के लिए आपको अलंकृत किया गया है। इसके साथ ही आपकी रचना के लिए आपको बंगाली राज्य अकादमी अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया है। वर्तमान में आप कोलकाता इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर में चेयरमैन की भूमिका अदा कर रहे हैं। आज सराय के इस छऊ की धरती पर ऐसे जाने माने लेखक, रचनाकार और साहित्यकार को हम अपने बीच पाकर गौरव का अनुभव कर रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसके साथ ही इनसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर संचिता भुई सेन, झारखंड ही आपकी जन्मभूमि रही है। 2008 में जेपीएससी के माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति आपकी हुई थी। पहली पोस्टिंग जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में आपकी हुई। वर्तमान में आप असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली एलबी इसम कॉलेज में हैं। लंबे समय से आप पत्र पत्रिकाओं में लिखती आ रही हैं और आपकी लेखनी में ड्रामा, उपन्यास, कथाएं और निबंध हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। जो आज चर्चा का विषय है इस सत्र में, अपने समय की कहानियां और निष्पक्षता की चुनौती। यकीनन बहुत बड़ी चुनौती होती है जब हम लिखने बैठते हैं। कहीं ना कहीं जब हमारी लेखनी उठती है तो हमारे विचार प्रभावित होते हैं, हमारे घर परिवार से है, हमारे समाज से हमारे प्रभाव विचार हैं वो प्रभावित होते हैं, हमारी शिक्षा से, हमारी संस्कृति से। और ऐसे में एक लेखक कैसे निष्पक्ष होकर अपने समय की कहानियों और कविताओं को आपके बीच ला सकता है, इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मैम संचिता भुई सेन मैम, इट्स ओवर टू यू। धन्यवाद। मैं सरायकला खरसावा साहित्य उत्सव छाप को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि मैं आज जिस विभूति के साथ बैठी हुई हूँ उनके साथ मंच शेयर कर पा रही हूँ। इसके लिए रविशंकर शुक्ला जी को और इस समिति के प्रत्येक कार्यकर्ता को धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। ये सरायकला खरसावा साहित्य उत्सव में जो छाप मेरे जीवन में पड़ा, कल से मैं सभी विभूतियों को देख रही हूँ। सभी विभूतियों का जो निकल रहा है वो भी मैं ग्रहण कर रही हूँ। ये मेरे जीवन में छाप छोड़ा है। और सबसे अच्छा लगा कि जैसे कि कोई पत्र पत्रिका निकलता है तो हम लिखते हैं प्रथम संस्करण। इसका जो बीज रोपण कल हो चुका है ये हमको पता चल गया है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है प्रथम संस्करण। माने इस अर्थात हम इसका वृक्ष का रूप हम लोग देखेंगे और हम चाहेंगे कि ये परिपूर्ण वृक्ष में परिवर्तित हो। धन्यवाद। ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন। हम लोग अपना भाषा हिंदी ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ सब हम लोग जो बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश में करेंगे तो सब कोई अच्छा से समझ पाएंगे। तो आज जो विभूति हमारे सामने बैठे हुए हैं, जो नक्षत्र आप इस मंच, वो नक्षत्र जो बड़े हुए हैं उनके साथ जो थे, बोल रही हूँ देव कुमार बसु, शक्ति, समरेश बसु, कमल कुमार मजुमदार, सुनील गंगोपाध्याय, मनमथ राय, सुनीति चट्टोपाध्याय, प्रेमेंद्र मित्र। आप समझ सकते हैं जिनका किताब हम लोग पढ़ते हैं, जिनको हम लोग फील करते हैं, अनुभव करते हैं उनका साहित्य से, और उनका जीवन व्यतीत हुआ उन लोगों से।
तो सर कुछ बताइए आपका बचपन का कुछ किस्सा या फिर उन लोगों के साथ आपका अनुप्रेरणा कैसे प्रभावित हुए, आपके साहित्य के ऊपर क्या इनका प्रभाव पड़ा है? Namaskar. I think good afternoon. Actually, I was born in a family. जो नाम पहले आपने किया है अभी नाम they are all Bengali, not only literature, Bengali culture. Actually, my father was an editor and a publisher, and he published the first books of many of the doyens of Bengali literature, who are the icons like Sunil Gangopadhyay, Shakti Chattopadhyay, and so many others. So I had the privilege to access them from my childhood. In fact, the social structure in those days was different. वो थोड़ा अलग से था, इतना पॉलिटिकल वो कौन पार्टी करता है, ये कौन पार्टी करता है, ये इससे नहीं मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा, ये सब नहीं थे. तो हम लोग सोशली सबको मिलते थे, and I had the opportunity to grow up in that kind of environment. And of course, seeing them so closely, and later on I read them. I first saw them, and later on I when I grew up, I started reading them. So definitely, when I started reading them, the memory of my interaction with them, that played a role, and it enriched me. That's all what I can say. It influenced my thought process, and when I started give effect to my thought process, which was reflected in my writing. थैंक यू सर. आज हम लोगों का विषय है ये बुक. इस किताब के ऊपर हम लोगों को आलोचना करना है. किताब का नाम है, किताब का शीर्षक है आमार समय आमार गल्प. लेकिन जो कवि को हम लोग मंच में आज शेयर कर रहे हैं, उनके कविता के ऊपर भी कुछ मैं प्रश्न करूंगी. सर, आप अपनी काव्य यात्रा में कई कई पीढ़ियों के कवियों को देखा है. मुझे लगता है कि आपका कवि का जो कार्यकाल है 45 साल तो हो ही गया होगा. मैं शुरू किया था. My first poem was published sometimes around 79-80. My first book was published in 83. Yeah. So it is almost. बदलाव देख रहे हैं. First of all, this is a good question. The changes is basically when we started writing, we hardly had any access to what has been written internationally in those days. What my contemporaries were writing. Sorry, I am speaking in English, but हमारा English भी अच्छा नहीं है, but Hindi उतना भी अच्छा नहीं है. कोई बात नहीं है सर, हम लोग सब. So when we started, we didn't have that scope. We had that USIS library and the British library, and we could get some books there. But those were all, of the early 20th century poets. And I still remember I got an opportunity. It was sometimes around 1985 or 86. Stephen Spender. He visited Calcutta, and I was there. I somehow managed an invitation. I was not invited, but I managed an invitation, and I was there. And then I got an opportunity to speak to him. That remained a great influence. What he spoke to me and all this. But so when we started writing, doing the tradition, what our the same traditions, same style of writing we were writing. 1999, 2000, after this internet came in and all those things, I think it is the middle of 2000 to 2010, sometimes like that. Then, what has happened today, the young guys who are starting writing, they have access to everything what has been written all over the world. So the language
today the language has come to what I name as the international language. Everyone, every language, young poets are writing in a language which is not of that particular genre, but it belongs to an international language. So that's the main difference which I see. Otherwise, love remains the prem to have the first choice of any poet. I mean, you will not be able to find out who has not written the love poem, and one of the most popular world poet. I mean, some people call them the most popular poet of the last century, Pablo Neruda. I mean, most of his poems which are popular are of love poems. So there is no change in the language, in the diction, in the way of presentation. That's the change. ठीक ठीक है सर. And here change is because of the internet. Yes. थैंक यू सर. ये कविता शब्द आपके जीवन में क्या मायने रखता है सर? Oh yes. See, every in Bengali especially, ये बोला जाता है कि सबको एक बार ना एक बार कविता लिखता है. I think it is not only for Bengali, but it is for everyone. All Indian, कोई ना कोई किसी ना किसी time में, either when he or she falls in love or when he or she breaks up the love or whatever it is, कविता तो लिखती है. तो मैंने इससे शुरू नहीं किया था कविता लिखना. मेरा किसी आदमी को मिला था वो डेथ पे. तो I went to see him and he brought out a book from his pillow in the hospital and he showed me a magazine very ये एकदम पुराना कुछ मैगजीन था. उसमें दिखाया देख हम भी कविता लिखते थे. टिगोर का साथ हमारा कविता निकला था. And I saw he died after within next 5-6 days or 7 days. But the amount of light I saw in his face, that his poetry was published with Tagore. So at that point of time in Bengali, Shakti Chattopadhyay, I think Shakti Chattopadhyay was the most popular poet. So I thought that हमारा भी एक कविता तो होना चाहिए जहाँ पर हम भी बोल सके कि शक्ति चट्टोपाध्याय के साथ हमारा लिखा. So I also have a happy day. So हम एक एडिटर को बोला आप ये इसको आप पब्लिश करो एक कविता. तो I wrote. So I went on giving him. He said नहीं और लिखो. Finally he published one thing. बट वो मैगजीन जब मिला देखो वहां पे कोई शक्ति चट्टोपाध्याय का तो कविता है ही नहीं. मैंने बोला ये तो नहीं है, तो मेरे को और एक तो लिखना पड़ेगा तो होगा. So then I wrote another one and then when he published it, then there I found that all the doyens of Bengali poets were there in that magazine and I also featured a small 4-5 lines poetry. And that's not the thing. And they made an occasion of release of that magazine, and all the senior poets like Subhash Mukhopadhyay, Shakti, all Nirendranath Chakraborty, they all started embracing me. You have started writing. आप भी लिखना शुरू कर दिया तो बहुत अच्छा लिखा. तो I thought 4 लाइन कविता लिख के अगर इतना प्यार मिलता है तो why not continue with that? And that is why I mean today, that is I survive with poetry. I mean without poetry I can't drink, I can't dream. That's all. Now इसमें एक question मेरे को, I used to work in a corporate life, so people used to ask me this. तो मैंने बोला कि I balance this because I believe that whatever I did, whether I have fallen in love, whether I have broken a relationship, whether I have done any job, all I have done because I wanted to write poetry. So this is what poetry is. ठीक, धन्यवाद सर. आधुनिक बांग्ला कवियों ने कुछ हद तक काव्य नाटक में काम किए हैं, लेकिन आप तो इस विधा में बहुत ही काम किए हैं. ये आप केवल कविता नहीं, आपके जो शॉर्ट स्टोरी है, ये काव्य नाटक है, इसमें भी मैंने अग्नि, मृत्यु, पृथ्वी, जल, ये सब का शब्द आप बहुत बार
व्यवहार किए हैं। तो ये कुछ तत्वों के आधार पे व्यवहार किए हैं कि कुछ No, ये तो ultimate है. See, we cannot live without Agni, we cannot live without Vayu. I mean, it's basically the ultimate things due to which we survive. So I have used those imageries in depicting or whatever I wanted to say. इसमें कुछ खास तत्व कुछ नहीं है, तो यही है कि यही हमारा जीवन का, हमारा सबका जीवन का यही है मूल उपादान. So I have utilized this. ओके। आप का बचपन में महारथियों के साथ बीता, ये तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। आप ऐसी कोई रोमांचकर घटना घटा है क्या, साथ साझा कर सकते हैं? Well, let me share a ghatana. Okay. See, I mean, the best thing is when we get an opportunity to mix with the seniors, the best thing is we get a chance to learn. So, in the later part of my life, I became very close to Sunil Gangopadhyay, who was the president of Sahitya Academy also at one point of time. But apart from that, I used to be very, very close to him. So, रोमांचित घटना means एक दिन हम उनको बोला, my new book was coming, so I said to him that would you mind going through my manuscripts and give me some suggestions if there is any. तो उन्होंने बोला ठीक है आप दीजिए, you cannot say no to me. तो हम उसको दिया है. बोला 7 दिन टाइम लगेगा. हम ठीक है. 7 दिन बाद उसको पूछा, वो बोला हाँ बहुत बढ़िया हुआ है, गुड बुक, गुड मैन्युस्क्रिप्ट. तो मैंने तो समझ लिया. मैंने बोला सुनील दा, ये आपने पढ़ा दी, ये जस्ट अब सबको बोलते हैं वैसे ही बोल रहा है. तो हंसने लगा. बोला आप समझ गया. मैंने बोला तो आपको इतना दिन देख रहा है तो इतना तो समझना चाहिए. Then he said, okay, you leave the manuscript and you come one day, you give me the date and you have to sit with me, then I will go through the manuscript. So finally it was 3 sittings and we discussed, we argued. He didn't want my way of expression. He wanted to follow whatever he understood as a poetry, but I got a chance to interact with one of the finest poets of not only Bengal, and he listened to me. He listened to my argument. This is something which I learned, and today when the young poets come to me with their manuscript and they argue with me, I give them that much of space because ये हमने हमारा से सीखा था. So I also give that space to the young. I mean, a lot of young poets come to me with their manuscripts. So इतना हम सीखा है, वही है हमारा एक बड़ा learning. There are so many things, but this is one of the biggest. मैंने अभी भी आपको ये याद आता है तो रोमांच आती है. हाँ, ठीक है सर. कविता के अलावा आप कला, कहानी, रंगमंच सबसे जुड़े हुए हैं. आप का सबसे अच्छा या फिर किसको आप सबसे अपने दिल से चाहते हैं? दिल से तो I wanted to write poetry only. Okay. But क्या होता है ना, कभी-कभी लिखने में, I mean, you feel that this, I mean, whatever you want to say, this form is not adequate to express whatever your mind or whatever you want to say. Then you start finding, the other forms of expression. And the verse dramas, whatever I have written the maximum number of verse dramas in Bengali language. So whatever verse drama I have written, this is only to find out a way, a form to express myself. And the similar thing for short story. I started writing short story because I felt at one point of time that जो हम बोलने चाहता है, जो कहने चाहता है, वो हम कविता में नहीं बोल पाएंगे. So I started, or maybe if I start exploring the other form, that if I say the same thing in another form, how it looks like. And this exploration has to be there with the creative person throughout. If that exploration
goes, then the creativity goes. That is what I believe in. जी जी सर। अनुवाद साहित्य के ऊपर आपका क्या विचार है? अनुवाद साहित्य मैंने क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। Yes. Translation, translation is something, history of civilization. I feel history of civilization is history of translation, or history of translation is history of civilization. I mean, we have to translate. You see, in our life, whatever we do, we actually translate. We speak means we translate our mind and then we put words to it and we convey that. Very good. That is translation. Any art form you do, someone is dancing, so he or she is translating some meaning into the dance. Someone is doing a theater, someone is doing a cinema. We are translating from one media to other media. So the translation, without translation, we just cannot survive. Now coming back to literature, and without translation, we wouldn't have got access to, such big writers who has written in some language which hardly we know, like Spanish language. I don't think most of our people, ज़्यादा आदमी तो पूरा Spanish नहीं जानते हैं. We know English more than we know Spanish. So now this Barkways or some big, big names in the world literature have got access to them without the translations. Another thing, coming back to India, there are so many languages. I think Sahitya Academy approved languages 27 or 28, something like that. Now, we wouldn't have gotten access to or interested to what has been written in our neighboring languages, neighboring states. We were literature rather than what is being written in Indian literature. So this translation has started. I mean, Sahitya Academy, National Book Trust, like government institutions has started promoting this. But now people have realized, and everywhere, every corner, this translation has started, and translation is very, very essential need. I mean, that has to continue. Without that, the flow of literature will get confined. जी। भारतवर्ष ही नहीं, अब विदेश में भी आयोजित होता है विभिन्न कवि सम्मेलन, कविता उत्सव। आप सब में पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादातर कोशिश करते हैं आप बांग्ला कवि के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इससे आपकी उपलब्धि क्या होती है? और आप को तो हम लोग विश्व पर्यटक भी कहते हैं कि आपने जहाँ जितना विदेश भ्रमण किए हैं और विदेशों में जो कविता का जो आप चारों तरफ फैलाए हैं, जिसको कह सकते हैं, तो वहाँ जाके आपका कुछ ऐसा कुछ घटना है जहाँ आप को अच्छा लगा कि वहाँ का ये कविता का जो बोलना या फिर वहाँ का कविता को आपको बहुत अच्छा लगा कि ये सब हमारे देश में भी होना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, the benefit I got जो मिला था मेरे को when I went to New Zealand for a Wellington International Poetry Festivals way back in 2005. This is the first time I met the global poets and the big names, and it changed my thinking process, the form about the form of the poetry. I mean, I stayed with them for 4-5 days, and ये 4-5 दिन में उन लोग को साथ खाना पीना, I mean, reading poetry, traveling together, all these things that opened up my mind. Actually, the how a poetry to be expressed, the diction, the form, and this is very important. थोड़ा पहले मैं बोल रहे थे कि with the internet, the international language, we have been able to access that. Another thing has happened. I mean, from the beginning of this century, this festivals, this literature festivals, poetry festivals, that is giving us an opportunity to interact with the fellow poets, fellow writers, and fellow thinkers, and exchanges of their views, talking to them, at times exchanging the books. Otherwise, we wouldn't have access to their books. So, with all these things, once किसी को जो thought process है, the thought process gets influenced, and one can refine that thought process and
bring it in his own way. So after my visiting the international poetry festival, couple of poetry festivals, I could feel that my form of writing has changed, and that influenced the Bengali writing style also. I mean, a lot of people started following that style of writing, which I basically got from one of the international festivals. So this is very, very important. ओके ओके किसी कवि की लोकप्रियता बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके लेखन में क्या उसको अच्छा है कि बुरा है See, everyone who writes, the ones, the more people should read his or her writing. सब कोई जनप्रिय होने चाहते हैं, but the problem is once you become popular, then he gets confined in that cage. He thinks that if I only write in this form, then only people will appreciate my writing. So in the process, what happens? He dries down. He or she dries down. He cages himself. बंद हो जाता है वो अपने आप केज में बंद हो जाता है so avoid a poet should avoid the popularity that is the audience might disagree with that because the moment you feel that I should write this one it gets predetermined then there's the end of your evolution further evolution so one should avoid popularity and try to explore till the last breath of writing as a writer unless you explore, you stop exploration means you are gone as a creative person. So popularity is, adverse to that. आपके अपनी कविताओं में अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के बारे में कुछ आपके कविताओं में कुछ क्या अंतरराष्ट्रीय कवियों का क्या छाप है अंतरराष्ट्रीय कवियों का छाप means influence. जी See, basically, I don't get influenced normally by any poet. It's writing, but I try to pick up the form. जी If I find there is some form which is which has not been explored by me, or not been explored in the language in which I write, so I try to bring that form in my language. जी ये मैं कोशिश करता है but otherwise basically we don't have too many elements to write in poetry this is all common things we keep on writing the nature nadis samudra pahar and relationships and some political issues इसका बाहर कुछ नहीं है लिखने का but जो है how you are representing that is more important वही है परिवेशन कैसे हो रहा है जी so to me the form become important when I read others poetry than the way he is speaking he or she than what he is speaking that becomes important आपके जीवन में पत्रिका लिटिल मैगजीन ये सब क्या मायने रखता है Little Magazine is a culture. Bangla mein Little Magazine is a culture. There are about almost 4,000 little magazines are published in Bengal itself. And I don't think any other language globally publish so many little magazines. So this little magazine is basically is a place where new or even an experienced author also get the opportunity to explore, to experiment. This gives and in fact in Bengal not many almost 100% of the big names they have evolved from the little magazines yes except names like Tagore and all those when the little magazine was not there but from last century beginning of last century when little magazine started
sometime around 1920, 25. After that, and from 1950, there's a lot of little magazines started, getting published. So the authors get an opportunity. First is to themselves. There's more uh, larger window to publish. Number one, number two, to experiment, which is very very important because little magazine there is no commercial aspect. All this little magazine is published by the help of the from the own pockets money, and then some sponsors, some small advertisements and all these things, but mostly from the own pocket money or friends pockets money. That is how little magazine is published. So they have a larger scope of experimentation, giving opportunity to new young poets, writers, authors, and that is how uh, the literature evolves, has got more opportunity to evolve faster. तरुण लेखकों के लिए लिटिल मैगजीन एक बहुत अच्छा Oh yes. माध्यम है। Oh yes. जी। Not only Tarun Lekhak, I mean for all All lekhaks who are not so commercialized, who are not so commercial. Yes, yes. आप अपने नए प्रजन्म के लिए क्या वार्ता छोड़ जाएंगे? कुछ नहीं. I only would like to learn from the new generations. Whatever they do, don't listen to anyone. जो मन चाहे वही करो, and let us learn from them. Nothing more to learn. I mean, they have got nothing to learn from us. They should learn on their own, and we should rather learn from them. That is my belief. Not part. जी, अब हम अपने जो किताब के ऊपर हम लोगों का वार्तालाप आज करनी थी, वही इसमें हम शॉर्ट स्टोरी हम लोगों को मिलता है। तो शॉर्ट स्टोरी के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है कि शांगो कोरी मोने हबे शेष हुए होइलो ना शेष, अर्थात जहां कहानी खत्म होता है वहीं से प्रश्न शुरू होता है, क्योंकि पाठक को वहीं से प्रश्न मिलता है, क्योंकि उतने समय तो वो कवि के साथ, लेखक के साथ चलते रहता है, मोड़ता है कहानी को, जिस तरह से चरित्र को लेके जाता है वो उसी के साथ टहलता हुआ जाता हुआ चलता है। लेकिन जहां वो सोचता है, पाठक सोचता है कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, तो उसके बाद अचानक कवि लेखक वहां पे स्टॉप, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है, वहां पे स्टॉप हो जाता है और वहीं से होता है क्वेश्चन शुरू। तो मैं ये किताब पढ़ी हूँ, सब शॉर्ट स्टोरी बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि आप लोग भी पढ़िएगा तो बहुत जैसा लगता है कि एक ही दिन में, एक ही समय में सब किताब, सब कहानी, शॉर्ट स्टोरी का यही है कि जब पढ़ना शुरू करते हैं कि तो सब कुछ खत्म करके शुरू करना होता है। तो जैसे कि पहला ही जो कहानी है वो है छोबीर मतन। वो जो कहानी है उसमें एक पेंटिंग है और एक लड़की है जो कि वो पेंटिंग के साथ अपना तुलना करती है। तो ये तुलना है कि कंपटीशन है? See, basically, this short story is, ये जो लड़की का बारे में अब बोल रहा है, ये ईना जो बोल रहा है, actually this painter was her father's friend. So this lady, this girl, when she was a young girl, she was an adolescent, she was somehow, developed a fascination towards that gentleman. So that gentleman then left the city and went somewhere, and then he's coming back after 20 years. 20 years. By that time, this lady has grown, he has children, he got married and children. So it's basically how he is now feeling that fascination again. Okay. So this short story is regarding that, but related to, centered around that picture. Okay. इस कहानी में एक लेखक कहानी है,
तो उसमें वो जो सॉफ्टवेयर उसके बाद उस कहानी लिखता है और उसके बाद उसका बहुत पॉपुलैरिटी हो जाती है और वो उसके बाद वो सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है। वहीं पे हम लोग एंड कर सकते थे, मतलब आप एंड कर सकते थे, लेकिन आपने लिफाफा में व्हाइट पेज क्यों भेजा? See, this is a background. This short story was written in 2003 or 4. It is mentioned over there. Okay. Now, this is exactly, the problem which we are going to face tomorrow. Tomorrow means in the years to come, because of the AI. Yeah. In that short story, when there was no concept of AI, then this short story is a problem that someone has imported a software which can generate a short story in 1 or 2 minutes. So when a real short story writer who takes about 2-3 days or 1 week to write a short story, so one of his friend who has got that software, he has suddenly took challenge and started writing this thing, and he became popular. Now one day the software failed. So this is a question tomorrow. We are all discussing in various sessions that what will happen to literature if AI comes in full fledged. Now it was like that, but what I made that this one day that software failed. So this new author, I mean, who was not an author but who was utilizing this software, so he was in a problem. What to do? Yeah. हम क्या कर सके यहाँ पे? अभी हमको इतना कमिटमेंट है, नाम हो गया. I got a chance to write a novel in a very big magazine or something like that. What to do? So he cannot write. वही मेरा He प्रश्न cannot write. So that is the end. So you think what he could do? He has sent some packet to the editor that this is my writing, and writing is nothing but. I mean, the machine has failed. I wanted to communicate with this. नहीं, वो तो संपादक को कह सकते थे कि मैं नहीं लिख पाई हूँ या फिर नहीं. वो बोल नहीं पा रहा है, because he has already earned some reputation, so he cannot say that I cannot write. व्हाइट पेज क्यों भेजा? वही मेरा. क्या भेजेगा? अच्छा. क्या भेजेगा? अच्छा. That's a rescue. ओके. ठीक. बहुत धन्यवाद सर. Thank you very much. श्रोताओं को बहुत धन्यवाद कि इतने इत्मीनान से हम लोगों की वार्ता सुने. सबको धन्यवाद.